Assalamu alaikum. I'm here again with a new lecture and the detailed derivation of the difference of energy between two orbits of chapter number 2, atomic structure. In this video lecture, we are going to discuss the change in energy of an orbit. And we all know that the change in energy or change in anything is calculated by subtracting the last reading with the first reading. For example, आपके पास you have 10 rupees and you spend 5 rupees of them, and then now you want to calculate your change in money. So you will subtract the amount that you had left and the amount you had before from that. So subtracting 5 from 10, you will get 5 rupees left, which means that the change in the rupees or in the amount that you had becomes is 5 rupees. Same goes for the difference of energy between two orbits. According to this equation, we have the energy is equals to mz square e power 4 upon 8 by epsilon naught square n square upon 2h square. There was the minus negative sign. Up here is the delta E, which is E2 minus E1 that I explained you abhi that subtracting low energy from high energy. We know कि E2 का energy ज़्यादा होगी, which I told you कि increasing energy increases orbit 2. जो E2 होगी वो orbit 2 की होगी, which means इसके अंदर energy ज़्यादा होगी E1 से. तो हम इसको पहले लिखेंगे, पहले मतलब इसमें से हम माइनस करेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिट. ये हमारी E2 है और E2 का माइनस का ही साइन आएगा दोनों में, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. ये हम लोगों ने दोनों पोटेंशियल एनर्जीज ली है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन वैसे ही है, फिर नेगेटिव और माइनस दैट ई जो भी वैल्यू है, हमें नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव. तो mz स्क्वायर 4 और क्या है, ये माइनस का है यहाँ पे. तो यहाँ पे से पहले हम कॉमन चीजें देख लेंगे. आप इसको इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो ये इस तरह बन जाएगी कि आप mz पॉजिटिव वाला जो है उसको इधर ले आए और नेगेटिव को बाद में ले आए. अब अगर इसमें हम देखें तो ये दोनों कॉमन है एक इस टर्म में, तो क्या हम इसका वो और जो कॉमन नहीं है वो सिर्फ है n स्क्वायर n1 स्क्वायर, और वो है जो n2 स्क्वायर. ये ऑर्बिट 1 की है और ये ऑर्बिट 2 की है. ये ऑर्बिट 1 की एनर्जी है और ये ऑर्बिट 2 की एनर्जी है. तो इसमें से हम क्या नाम है कॉमन ले लेंगे. जो हमारे पास कॉमन है mz स्क्वायर e पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर. कॉमन ले लिया और ये क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 होल स्क्वायर. ठीक है, जिसकी वैल्यू ये आ गई. अब हम देख सकते हैं कि हमें एक कांस्टेंट एक और मिल गया है, which will remain constant for every atom, क्योंकि हर एटम का इलेक्ट्रॉन का मास जो है सेम है, चार्ज भी सेम है, एप्सिलॉन लैट की वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट है, और जो h स्क्वायर है उसको भी हम कांस्टेंट लेते हैं. तो जब इसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल गया, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल. इसका कांस्टेंट इज ट्रू फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन. For calculating every energy change in an electron, we will put this value instead of this constant, and can name this constant K, A, or either anything that we want. So we got the change in energy formula of an electron, which is 2.18 into 10 power minus 18 joule into 1 upon n1 whole square minus 1.2 whole square. The main thing is to remain remember these formulas and to practice the derivation. I think this derivation in the book is almost as easy as we can like any simple theoretical thing to understand. This is an easy derivation which I hope you can complete or you can practice at home too. So I'll prefer or I will recommend you to practice this and try remembering these constant and formulas. Now we are coming toward the derivation of energy, which derivation of frequency. So now we are discussing the derivation of frequency of an atom. Okay.
Do you know that the frequency, or sorry, the change in energy of an atom is equal to h mu? H into velocity. And we know that we have calculated the change in energy, which is 2.1 into 10 power minus 19 into 1 upon n1 whole square into 9 square. So can we put this change in energy the value according to over here and remain that hv remains same. So हम यहाँ पे चेंज इन एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारा 2.18 into 10 power minus 18 जूल into 1 upon n1 whole square minus 1 upon n2 whole square. ठीक है, ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, विच इज इक्वल टू अगेन एच वी, जो कि हमने एच वी के इक्वल ली है। तो सिंपल 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 हमें यहाँ पे क्या नाम है वो मिल गया, वो जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल गई बाय डिवाइडिंग एच प्लांक्स कांस्टेंट और एच ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड से एच प्लांक्स कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 1 अपॉन एच आ जाएगा, जो कि एच क्यूब में तब्दील हो जाएगा, और ये क्या बन गया, हर्ट्ज और साइकिल्स। अब इसके अंदर क्या चेंज हुआ, जो चेंज इन एनर्जी का कांस्टेंट है वो था me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, और हमारे पास जो वो उसका कांस्टेंट है उसमें हमारे पास एच स्क्वायर की जगह एच क्यूब हो गया। सिंपल एज दैट। अब दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा और you can solve the problem then derivation of wave number। अब हम वेव नंबर के डेरिवेशन देखेंगे, जो कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और जो वेव नंबर है उसका रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव नंबर इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब हम v की जगह पे क्या नाम है, जो इक्वेशन 0.13 है ये इक्वेशन है, इसको पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की जगह पे v, अगर मैं v बोले जा रही हूँ तो आप समझ जाएगा कि दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज दैट स्क्वायर me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एच क्यूब, और 1/n1 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू वेव नंबर इनटू c। तो अगर हम c को यहाँ से रिमूव कर दें, मीन डिवाइडिंग c ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जहाँ के 1/c यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और वहां पे भी 1/c मल्टीप्लाई होगा, तो वहां से वहां कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा। तो एक और कांस्टेंट के साथ हमने वेव नंबर की इक्वेशन भी बना ली, और इस इक्वेशन की हमने इस जो कांस्टेंट आया है इसके अंदर हमारे पास को हम आर का नाम देते हैं, विच इज 1.0967 पर मीटर। अब इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, और जिस तरह से ये टोटल इक्वेशन बनी है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। So Allah Hafiz for this time. Now we will be going with, in the next lecture, we will be going with the quantum